Hi everyone, today is day 120 and today I will practice on spirituality and build myself and improve every day. Now, we all are practice on the spirituality of Nam Japo and tomorrow, this day I will try and focus on yourself and develop your inner peace and continuous learning. Thank you to be join.
This time I build this spirituality journey. I can follow 20 minutes every day to practice spirituality. Now this one habit changed my life totally. I will try to change ourselves every day. Now my friends, this is the biggest habits and today and every day I practice 6 habits in this live session. And this the session will be dedicated for self improvement and changes. I can build every day. I will try to build the consistency and discipline every day. Now I focus. So D1 to I will start to change and look 6 months after what I am going and where I am going. Now this is the one of the biggest things to will be changed every day. And today is day 120 and I am very happy to complete 120 days today or next few month and few days. My focus is very sharp. In the every 2200th day, you build my personality. Now I focus everything in every day. Now I can start the any habits 2 minutes in a day. Now I focus only 2 minutes to build myself journey. Now we all are continue to these habits and these habits will be completely change my life. And the first habits is spirituality. Now these habits will be completed and 20 minutes practice every day. Now 20 minutes speaking in English and 20 minutes public speaking and one books I can read the and that summaries, key points, etc. Now we all habits to include 6 habits to practice every day and today day 1 to day 120 totally changed my life. Day 1 to day 120 I will focus every situation to build my mindsets, my journey. Now we all are watching this session and this session will be self improvement. Now every day you can build our personality in 1% every day. Not 1 hours a day practice. 20 minutes is enough time to starting in your journey. I started journey in 2 minutes. You can check my first videos and second, third, and last. My we all are live. My watching. You can see my lives many of times to live. All mission is one place because I build my consistency and discipline. This is the most important things to will be changed. Now I start my second habits, book reading, and I ask a chat GPT, give me one book summary this time, and I will practice 20 minutes. I ask the questions related by this book. Now I can start. First I check which books are today I read. So I start. And my voice is not audible this time. Next 20 minutes. Thank you to be watching the next session.
Now, my dear friend, my second habits will be completed. This my second habits. Book reading is my second habits. Now, my friend, this book is only dedicated for six pillars of self-esteem. First, consciousness, acceptance, responsibility, assertiveness, purpose, and integrity. In the sixth lesson, to we follow our day-to-day life. Like I am a student of BCA. I am today I am pursuing BCA in Des College. Now I follow a student example. Suppose you want to become a financially strong. Consciousness in the first step is track spending and study hours. Acceptance admit current skills honestly. Responsibilities protect study our time. Purpose set a 12-month income goal. Now, integrity follow your schedule even when no one watching. Now, you can build your practice session. You practice every habits, but anyone not watching to what you can do. Now, no problem. You will try to focus every situation to dealing. You practice every habits without anyone watching. Okay, what are you doing today? And every things will be dedicated to compare ourselves. Now, my third habit is fitness, and now I will try to practice fitness habit. Now, 20 minutes I do some exercises. Now, start. This is fitness. हार्ट से बर्फी ये एक्सरसाइज साथ लेग चेस्ट शोल्डर आर्म्स कोर एंड हार्ट लंग सबको ट्रेन करना है। बर्फी कैसे करें? सीधे खड़े हो जाओ, स्क्वाट में नीचे बैठो और हाथ जमीन पर रखो। पैर पीछे जंप करो, पुशअप पोजीशन यानी चेक। Now I can practice the session.
ऐसे ही खुद पे काम करते रहो। खुद को हमें ताकतवर बनाना है। अपने जितना भी समय मिल रहा है उन सारे समय में अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है और हमें मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली सभी कामों को करते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। नाउ यही वो हैबिट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को चेंज करती है। जो हम डे वन पे थी, जब भी से हम स्टार्ट किए हैं डे वन से लेकर डे आज 120 डे हो गया। और इस डे पे हम अपने आप को जाना, अपने बॉडी फैट्स एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ों को एक्सपर्टीज किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी आप को इम्प्रूव किया। नाउ अभी आज हम लोगों ने 10 पुशअप किया, तो मानते हैं कि आज हमने 10 पुशअप किया और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया ना। ये 10 पुशअप मेरे लिए इनफ है आज के लिए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं अपने आप में बदलना है, शुरुआत छोटे से करना है और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। अभी हमने ज़्यादा से ज़्यादा से 10 से 15 पुशअप ही, 20 पुशअप ही मारे होंगे। अभी इतनी गर्मी शहर में है, क्या बोले। नाउ वी all are, you can practice the all session. Now I can practice the Jai Bajrangbali any Naam Japo in 20 minutes, and the 20 minutes book reading something special and be continuous to your mission. Now you have a practice, you have a time to manage our life to build your system. Now I can source the third habit, fitness. तो दी द बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस, द बॉडी स्ट्रांग रहती है, मसल्स एंड स्टेमिना बढ़ता है। नाउ फैट कम होता है और बॉडी शेप इम्प्रूव होती है। नाउ वी ऑल today I learned something new in this fitness journey and fitness improvement challenge. And today is day 120 and I will try to build my only consistency and discipline practice 2 minutes every day. Only 2 minutes every day I can practice and improve my physical health. And this is the third numbers of habits. And the first is spirituality, and the second book reading, and third is be continuous fitness. Today I build my 1% in my fitness journey. Now nobody can see, but I can practice.
Good morning, everyone. This habit is number fourth, public speaking. And now these habits will try to practice on English speaking and public speaking are both. Now build a asset, build a freedom. Now, good morning, everyone. Today I want to speak about a word that can change an ordinary life into an extraordinary one. That word is asset. An asset is not just a house, a business, a stock, a piece of land. The greatest asset is the ability to create a value. Your knowledge, your skills, your health, your character, your discipline, and your reputation are assets that to make market crash can fully destroy. Many people spend their life chasing income. A few spend their lives building assets. Income pays today, bills, assets pay tomorrow. Now, freedom. Income stops when you stop working. Strong assets continue working even when you are silly. Now, think about a tree. A tree does not give a fruit on the day it is planted. It's grow quietly underground before it grow visibly. Above the ground, asset building is the same. Reading one book many not changes in your life overnight. Investing one a small amount may not make you rich tomorrow. Exercising for one day may not be transform your body, but repeated over years, these actions become a powerful forest of our assets. In the modern world, the highest performing individual follow a simple practice consume less than they created learn more they impress. They do not waste energy trying to look successful. They focus on becoming a valuable. Let me give you a practical framework. Now, build assets, build legacy, a world class speech. Good morning, respected teachers, mentors, and friends, and future leaders. Today, I want to speak about the subject that sits and the centers of the wealth, freedom, influence, legacy. The subject is assets. Most people are taught how to earn money, few and very few the taught the how to build the assets. That the single difference separates temporary success from the lasting success. Let us the begin with a powerful truth. Money is not wealth, assets are wealth. The money is your hand can disappear in a day, and the assets can create a value of a decades. A salary is a stream, and asset is a spring. A salary feeds the present, and assets feed the future. And the assets and anything that continues to produce value after the effort is made a book your right. Now, a business you build skills, you master a brand, you create a healthy body, you maintain a network of a trust, you born an investment that compounds. These are the assets. They are silently workers. They do not ask for applause if they keep serving you year after year. Look at nature. A farmer who eats all his seeds enjoy one meal. A farmer who plants his seeds creates a harvest for a many seasons every rupees. You save every hours, you study every workout, you complete every relationship. You nature is a seed. The question is not whether you have the seeds. The question is whether you are planting them and consuming them. Now, the asset mindset is the blueprint of the greatness.
Good morning, everyone. Close your eyes for a moment and imagine your life 20 years from today. Imagine the house you live in, the health you enjoy, the work you do, the respect you receive, and the freedom you possess. Now we ask yourself one question: what will we create that future? Will it be the luck? Will it be the talent alone? Will it be one opportunity? No, your future will be created by the assets you build starting today. And the in assets is not a merely something, it is the something that the continuous to create value. A strong mind is an asset. A disciplined body is an asset. A useful skill is an asset. A trusted reputation is an asset. A business, an investment, a book, a patent, a digital platform, a rural community. These all are the assets. The tragedy of a many lives is not a lack of income, it is the lack of assets thinking. Income is the lack of asset thinking. People work hard from many money and then exchange that money for things that the loss value. The wealthy think differently. They ask, what can I build? What can I build? Today that will help keep or rewarding to me tomorrow. Now every day you are making one of the two decisions, one and two decisions. You are either consuming your future or building your future. When when you spend hours scrolling without learning, you consume your future. When you spend the hours of reading, practicing, coding, writing, or exercising, you build your future. When you buy something only to impress others, you consume your future. When you invest in skills, a course, a tool, or a business idea, you build your future. The difference seems small today, but time turns small choices into enormous result. Think about compounding. If you improve just 1% every day, the improvements appear invisible at first. Over years, it's becoming the extraordinary results. Assets grow in the same way. They being quietly the first investment is small, the first workout is difficult, the first video gets few views, the first customer is uncertain, but the persistence transforms tiny beginning into powerful outcome. History repeatedly proved that civilization rise when they create more than they consume. The same is true for individual. Your life rises. The same is true for individual. The citizens of the era of to build everything. There is a history repeatedly proves that civilization rise when they create more than they consume. The same is the true for individuals. Your life rises when you certain creation exceeds your consumption. Let me share a principle used by the high performance around the world. Convert income into assets before converting income into lifestyle. The principle protects freedom. A higher lifestyle can trap you. A stronger asset can liberate you. A student often to ask me, how can I become a financial successful? I tell them, start by the becoming the economically valuable, learn communication,
learn technology, learn finance, learn sales, learn problem solving, learn to create a value of other people income follow you value. But remember, the greatest asset in your character without integrity, wealth becomes the fragile without discipline. Talent becomes the wasted without responsibility. Opportunity becomes the dangerous character is the operating systems on which every other asset runs. I challenge you to build on the assets in each area of your life. I challenge you to build on one is health. Health is assets and exercise daily. Your health is assets, and every day you can try to build your fitness. You can try to build 2 minutes practice every day in fitness. The first asset is health. Now one knowledge assets. Next is knowledge assets. Read one book each a month. One skills assets. Master a marketable skills like public speaking and English speaking. One financial assets. Invest consistently. One relationships assets or trust or the honesty. One spiritual asset. Spend time in reflection or prayer. And the thank you God, give me the all the my life. So do these 5 years and your life will not merely improve, it will transforms. The modern world celebrates the visibility, but real wealth is often too invisible. Nobody sees the books you read at a night. Nobody sees the workout you complete when you are tired. Nobody sees the saving you choose not be spent. Nobody sees the hours of spent the practicing a skill. It's the those invisible action eventually creates a visible success. Never envy someone result without understanding their assets. A powerful question to ask every evening is what asset did I build today? If you can the answer that the questions every day for the next decade, your future will be ready radically different from your present. If you can answer that questions every day for the next decade, your future will be radically different from your present. My friends, do not spend your youth trying to look rich. Spend your youth become valuable. Fashion fads, gadgets becomes outdated. Trends disappear. But knowledge, health, discipline, reputation, and productivity is the very real asset continue to serve you for a lifetime. One day your children, your family, and your community will the benefits from the asset you build today. Your discipline can become their opportunity. Your investment can become their security. You, your example can become their inspiration. So stand up with a builder mindset. Build a patiently, build ethically, build consistently. Build even when nobody notices, build when progress feels slow. Build when others are distracted. Build because every brick placed today become a part of the freedom you will be live tomorrow. Now these fourth habits will be completed. Remember these final lines. Poor people spend first and hope for the future, and the builders invest first and create the future. Choose to be a builder.
Choose or build or assets. Choose or build a freedom. Choose to build a legacy that will outlive you. Now to this. Thank you to you. And the next. Assets, the invisible power behind the extraordinary life. The last paragraph. Respected teachers, mentors, friends, and future nation builders. Today, I invite you to think beyond money, beyond marks, beyond job titles, and beyond temporary success. I invite you to think about the assets. Think about the assets. Now, most people spend their entire lives asking how much can I earn. Very few ask what can I build that will the continue creating value long after today is over. The first question creates workers. The second question creates builders, leaders, and legacy makers. Okay. And the asset is not a merely an object. An asset is a source of future value. A healthy body is an asset because it gives energy, a discipline. Mind is an asset because it makes a better decision. A valuable skills is an asset because it creates opportunities. A trusted reputation is an asset because it is open the doors. Financial investment are assets because they can grow while you sleep. Let me say something that maybe change the way you see your life. Let me say something that may change the way you see your life. Your life today is the result of the assets you build yesterday, and your life tomorrow will be the result of the asset you build today. Now, if you want a stronger future, build a stronger asset. Look around the world. Great companies were once a small ideas. Great leaders were once unknown students. Great investors. Now, thank you to be watching the fourth habits to be practiced. Now, my fifth habit is English speaking in Hindi and everything. Now, public speaking. Now, English speaking session will be completed. Now, thank you to listen the fourth habits. Now, I can practice the and sixth habits now consistently, and both are the same. Now, start. And okay, I will try to. एसेट बनाओ, भविष्य बनाओ। एक विश्व स्तरीय प्रेरणादायक भाषण। सुप्रभात आदरणीय गुरुजन, मृत मित्रों और भविष्य के नेताओं। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करना चाहता हूँ जो किसी भी व्यक्ति की तो स्वतंत्रता, सम्मान और विरासत की असली नींव है। वह विषय है एसेट, अर्थात ऐसी संपत्ति जो समय के साथ लगातार मूल्य पैदा करती है। हम में से अधिकांश लोग बचपन से यह सीखते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। लेकिन बहुत कम लोगों को यह सिखाया जाता है कि एसेट कैसे बनाया जाता है। यही वह अंतर है जो साधारण जीवन और असाधारण जीवन के बीच की दूरी को तय करता है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। वेतन तब तक आता है जब तक आप काम करती हैं, परंतु एसेट तब भी
काम आता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग केवल आय नहीं बनाते, वे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो भविष्य में भी आय उत्पन्न करती रहे। दोस्तों, एसेट केवल मकान, जमीन या शेयर नहीं होते। आपका ज्ञान, आपका कौशल, आपका स्वास्थ्य, आपका चरित्र, आपकी अनुशासन प्रियता, आपकी प्रतिष्ठा और आपका भरोसेमंद व्यक्तित्व भी एसेट है। ये ऐसे एसेट हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता है। जरा और देखिए, किसान यदि सारे बीज खा जाए तो उसे केवल एक दिन का भोजन मिलेगा, लेकिन वही किसान यदि बीज बो दे तो वर्षों तक फसल प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हर दिन हमारे पास समय, ऊर्जा और धन के रूप में बीज आते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास बीज हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उन्हें खर्च कर रहे हैं या बो रहे हैं। आज की दुनिया हमें उपभोग करना सिखाती है। अधिक खरीदो, अधिक दिखाओ, अधिक खर्च करो, लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। जिन लोगों ने समाज, उद्योग और राष्ट्र को बदला, वे सबसे बड़ी उपभोक्ता नहीं थे, वे सबसे बड़े निर्माता थे। उन्होंने अपने समय को ज्ञान में, अपने ज्ञान को कौशल में और अपने कौशल को एसेट में बदला। चलिए, एसेट की शक्ति, पावर ऑफ एसेट। साधारण इंसान से असाधारण व्यक्तित्व तक। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय मित्रों और उज्जवल भविष्य के निर्माता। आज मैं आपसे उस शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जो किसी भी व्यक्ति को किस्मत बदल सकती है। और वह शक्ति ना तो केवल धन है और ना पद, ना पहचान। यह शक्ति है एसेट निर्माण की सोच। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। दूसरे वे जो कमाते हैं और उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए लगा देते हैं। पहले लोग वर्तमान में जीते हैं और दूसरे लोग भविष्य का निर्माण करते हैं। याद रखिए, कमाई आपको आज जीवित रखती है, लेकिन एसेट आपको कल स्वतंत्र बनाते हैं। एक नौकरी आपको वेतन देती है, पर एक कौशल जीवन भर अवसर देता है। एक महीने की आय समाप्त हो सकती है, पर ज्ञान जीवन भर साथ चलता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बनाते हैं। मैं आपसे एक उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। मान लीजिए दो छात्र हैं, दोनों के पास समान समय, समान उम्र और समान अवसर हैं। थोड़ा सीखते हैं, एक दिन में दोनों समान दिखेंगे, एक महीने में भी अंतर छोटा होगा, लेकिन 5 वर्षों बाद उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और अब अवसरों में जीवन और सम्मान का अंतर होगा। यही चक्रवृद्धि का ब्याज है। दोनों के पास समान समय है, समान उम्र है और समान अवसर हैं। पहला छात्र अपने अधिकांश समय मनोरंजन में बिताता है, दूसरा छात्र प्रतिदिन थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा व्यायाम करता है, थोड़ा सीखता है और एक दिन में दोनों समान दिखेंगे, लेकिन एक दिन दोनों असाधारण बन जाएंगे। यह है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंडेड ग्रोथ। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। लोग सफलता दिखाना चाहते हैं, सफलता बनाना नहीं। महंगा फोन खरीदना आसान है, मूल्यवान कौशल बनाना कठिन है। धन नहीं, एसेट बनाओ, सफलता का वास्तविक मार्ग। सुप्रभात आदरणीय गुरुजन, प्रिय देश की उज्जवल भविष्य। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो हर छात्र, हर युवा, हर सपने देखने वाले व्यक्ति के
जीवन की दिशा बदल सकता है। विषय है धन नहीं, एसेट बनाओ। धन नहीं, एसेट बनाओ। दोस्तों, हम सब सफल होना चाहते हैं। हम अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा घर, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इन सभी चीज़ों की जड़ क्या है। जड़ है एसेट निर्माण। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन धन टिकता नहीं यदि उसके पीछे एसेट ना हो। वेतन आता है और खर्च हो जाता है, बोनस आता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन एक एसेट बार बार मूल्य पैदा करता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग केवल आय नहीं कमाते, वे आय पैदा भी करते हैं, करने वाली व्यवस्था बनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आज आपकी नौकरी है तो आपके पास क्या बचेगा? आपका ज्ञान, आपका कौशल, आपका स्वास्थ्य, आपका अनुभव और आपका चरित्र, यही आपकी वास्तविक एसेट है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, बल्कि यह पूछना चाहिए कि मैं कितना निर्माण कर सकता हूँ। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी में डाला जाता है तब वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, वह अपने अदृश्य रूप से जड़ें बनाता है। उसी प्रकार आपका प्रयास भी पहले अंदर से आपको मजबूत बनाते हैं। लोग परिणाम बाद में देखते हैं, संघर्ष पहले नहीं दिखता। मैं युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आपकी उम्र आपके उपभोग की नहीं, निर्माण की उम्र है। यह वह समय है जब आपको अपने अंदर निवेश करना चाहिए। रोज पढ़िए, नई तकनीकी सीखिए, अंग्रेजी और संचार कौशल सुधारिए, फिट रहिए, अच्छे लोगों की संगति चुनिए, छोटे बचत की आदत डालिए। ये छोटी आदतें भविष्य में विशाल एसेट बनती हैं। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली एसेट है डिसिप्लिन, जो कि हम डे 1 से डे 120 तक लगातार करते आ रहे हैं। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा 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 सुधार करता है, समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। मैं आपको एक सरल सूत्र देना चाहता हूँ। पहला, समय। दूसरा, अनुशासन। तीसरा, सही दिशा इक्वल टू एसेट। एसेट प्लस धैर्य इक्वल टू संपत्ति। संपत्ति प्लस चरित्र इक्वल टू सफलता, अस्थायी सफलता। याद है कि बिना चरित्र के धन हो सकता है, इसलिए ईमानदारी, विनम्रता, जिम्मेदारी को भी कभी मत छोड़िए। विश्वास सबसे महंगा एसेट है। एक और महत्वपूर्ण बात, एसेट केवल आपके लिए नहीं होती है। जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो आपके परिवार की सोच बदलती है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं तो आपको घर में सुरक्षा आती है। जब आप सफल होती हैं तो आपके गांव, समाज और देश के कई लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए अपने सपनों को केवल व्यक्तिगत मत रखिए, उन्हें इतना बड़ा बनाइए कि उनसे दूसरे की जीवन भी बेहतर हो। आज मैं आप सभी से एक संकल्प करवाना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पढ़ूंगा। मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा। मैं एक उपयोगी कौशल सीखूंगा। मैं अपनी आय का एक हिस्सा बचाऊंगा। मैं हर दिन कुछ नया निर्माण करूंगा। यदि आप अगले 5 वर्षों तक केवल 5 बातों का पालन कर लें